Okay, let's start. So, till now I introduced to you the Euler Lagrange equation, and I also did some problem solving based on that. Today, I want to introduce the Hamiltonian approach, or rather, I want to obtain the equations of Hamiltonian, the Hamiltonian equations, and then we will have another approach which can be used for problem solving. Okay. So we have 1 hour today, so let us look at the Hamiltonian equations. So how is the Lagrangian approach different from the Hamiltonian approach? So what happens in the Lagrangian equation is that Lagrange approach is that you have a system, okay, and then you try to find out what is the degree of freedom of the system, how many particles are there in the system, and then based on how many degrees of freedom are there, you try to find out the generalized coordinates. And using the generalized coordinates, you then find out what is... Screen is not visible, sir. अच्छा, okay. Just let me share. Okay, मैं भूल गया था. Sorry. Now is it visible? Yes, sir. Okay, so in the Lagrangian approach that we talked about, we can break it down into a few steps. That first of all, you are given some kind of a system, and then in that system, you try to find out what is the degree of freedom of that system. Whether it consists of one particle or many particles, you try to find out how many independent variables are necessary to be defined uniquely so that we can represent the state of the system uniquely at any given point in time. And then you try to find out what are the generalized coordinates. Then you find out the kinetic energy, the potential energy, the Lagrangian, and then you apply it into the Euler-Lagrange equation, which basically gives you the equation of motion. Okay, it just gives you the equation of motion. And then you'll have to solve the equation of motion, right? That itself is not enough. You have to solve it. The equation of motion is most likely some kind of a second order ordinary differential equation, है ना? सिस्टम है आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिया, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लैग्रांजियन को आपने डिफाइन कर दिया, फॉर्मुलेट कर लिया, फिर वहाँ से ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑब्टेन किया, विच इज़ most likely some kind of a second order ordinary differential equation. Then you solve it, and when you solve it, you obtain the solution for qi with respect to time, let's suppose, like x with respect to t, y with respect to t, r with respect to t, theta with respect to t. You obtain that, and from there you obtain you can define what is the state of a system at any given point in time, whether in the past, present or in the future. So that way you can get an idea about the system. लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत बारी जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरली इंटीग्रेबल. Okay, so in that kind of a situation, sometimes you can obtain certain quantities like momentum, etc., without actually having to solve the equation of motion. Without actually solving the equation of motion, you can, in certain situations, obtain some sort of a physical quantities like momentum, vagera, vagera, and then in that kind of a situation, the Hamiltonian approach is beneficial. Okay, so for example, मैं आपको एक example देता हूँ. So let's suppose we have a system of particles. Let's suppose we have a system of particles under the influence of a potential field where potential is a function of space or independent of time. Potential is dependent only on position.
Suppose we have a system of particles under the influence of a potential field, मतलब V, where potential is dependent only on the position. ऐसे situation में I can find out the partial derivative of the Lagrangian with respect to the generalized coordinate. Let's suppose x here represents the generalized coordinate, and x dot represents the generalized velocity. As a situation mein, if I do the partial derivative of the Lagrangian with respect to the generalized velocity, not the generalized coordinate, okay? So that can be written as del upon del x dot of Lagrangian is nothing but the kinetic energy minus the potential energy. So this is equal to del upon del x dot of t minus del v upon del x dot. तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि the potential is usually dependent only on the position. Majority of the potentials are velocity independent. Okay. If potential is velocity independent, the majority of the line potentials are not dependent on velocity but instead on position. Is velocity independent because नीचे velocity का term है ना, basically velocity independent. Then this term is zero, right? So this simply basically gives us ये zero हो गया, तो del upon del x dot half of m x dot square plus y dot square plus z dot square, let's suppose. So this simply gives us m x dot. Okay, so mx dot is nothing but what? Mx dot is nothing but p momentum component along the x-axis. So this is nothing but linear momentum. Yes, mx dot मतलब mv हो गया ना. This is linear momentum. So the partial derivative of the Lagrangian with respect to the generalized velocity gives you something that replicates what? The linear momentum. Now ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा this is going to be happening. Forces may not necessarily be velocity independent. It may be dependent on velocity. In those cases, you may not necessarily show it in this manner. But what I'm saying is that you can define a generalized momentum in this particular manner. You can define a generalized momentum, also known as canonical momentum or conjugate momentum. जिस तरह से हमने generalized velocity define किया है, generalized coordinates define किया है, उसी तरह से I can define a generalized momentum. Generalized momentum or canonical momentum or conjugate momentum. In this particular manner, that यहाँ पे you are taking the partial derivative of the Lagrangian with respect to some generalized coordinate, then the component of the momentum along the direction of the generalized coordinate is that equal to this particular quantity. So it's nothing but P along some j is equal to del L upon del Qj dot. That's it. This expression is known as the canonical momenta or the generalized momenta. Okay, it's a definition, so it's better that you remember it. It's a definition that जिस तरह से हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज वेलोसिटीज़, उनको समझना मुश्किल नहीं है, इजी है. बट यहाँ पे जनरलाइज मोमेंटा को समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि अगर पोजीशन डिपेंडेंट पोटेंशियल्स के लिए मैं लैग्रांजियन का पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी, then I end up getting the linear momentum along that particular direction. That's it. Now this is true only for position dependent potentials, but अगर मैं velocity dependent potentials के लिए भी करता हूँ, still ये जो general expression है वो मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, I can write these general expressions so that this the canonical momenta or the conjugate momenta of any kind of a given system is nothing but the partial derivative of the Lagrangian of that system with respect to the generalized velocity. This is clear, guys?
Yes, sir. Okay. Now, what is the Hamiltonian approach? So बेसिकली क्या है, अगर आपके पास लैग्रांजियन आ गया तो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था लैग्रांजियन आ गया, फिर वहाँ से आप इक्वेशन ऑफ मोशन अपटेन कर सकते हो है. बट राइट नाउ आई हैव गिवन यू एन एक्सप्रेशन जहाँ से आप डायरेक्टली मोमेंटम को भी अपटेन कर सकते हो. मोमेंटम अपटेन कर लिया आपने. लैग्रांजियन अगर आपको मालूम है तो लैग्रांजियन का पार्शियल डेरिवेटिव with respect to the potential velocity, generalized velocity, will give you the momentum. So now this is a quantity that you know even without solving the equation of motion. Okay. So now what the Hamiltonian approach involves is that it approach looking at quantities which are not necessarily functions of generalized velocities but are functions of this generalized momentum. So in short, the Lagrangian approach and the Hamiltonian approach involves the quantities the which are functions that are defined with respect to generalized coordinates, generalized velocities and time. Say you make a transition to quantities which are defined with respect to generalized coordinates, generalized momentum and time. Are you understanding? So when you make a substitution of the generalized velocity with the generalized momentum and you redefine some of these parameters and the equations involved, then you're dealing with the what is known as the Hamiltonian approach. Okay, the transition from Lagrangian to Hamiltonian formulation simply involves a change in the variables in our mechanical functions from generalized velocities to generalized momentum. So these quantities basically Q, P, these are known as, so time तो हम implicitly मान लेते हैं कि time है. So you can write simply as, let's suppose Q dot का जो transition है और functions को you write it in terms of Q, P. Okay, so Q, P, these are known as canonical variables. These are known as canonical variables, and the procedure for switching for switching variables in this manner is given by what is known as the Legendre transformation. Legendre transformation. Let me show you an example, okay? Legendre transformation. So आगे बढ़ते हैं फिर. Let me show you how we can transform Q dot to P using Legendre transformation. तो उसके लिए we're going to suppose two variables. So velocity momentum नहीं है, just two variables. Let's suppose we have two variables V and P. Okay, V and P, and उनके बीच में let me draw a graph. So on the x-axis you have V, on the y-axis you have P, and there is some kind of a functional relationship that looks something like this. ठीक है? I'm just drawing the diagram here, and I'm not giving some kind of a expression as such, but the कोई functional relationship है P with respect to V, it may look something like this. All right. ठीक है, now let us define the problem. Okay, you have two variables V and P such that जो P है quantity is a function of V.
Okay, the p quantity is a function of v, as it is obvious from this graph. Okay, there is a relationship that exists between both. So that means the function, जिस तरह से y एक्सिस में अगर y और x के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप होगा तो y कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, एंड एट v इज इक्वल टू 0 p v इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो 0. मतलब यहाँ पे जब v इज इक्वल टू 0 होता है तो p इज ऑल्सो इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन p एंड v. सो अगर ऐसा एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, देन वी कैन ऑल्सो से a reverse relationship exists. We can also say reverse transformation exists. That means v can also be written in terms of p. ठीक है, अगर y can be written in terms of x, then x can be written in terms of y. As simple as that, because दोनों का ही एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप है. some kind of a single valued function is there, so you can write it in terms of this. All right, so if p can be written in terms of v, then v can also be written in terms of p. Okay, now I am just trying to define a setup here. Okay, मैं define कर रहा हूँ ये सब चीज़ें ताकि मैं उसके ऊपर कुछ analysis कर सकूँ. Now let us also define two separate functions, two other functions. Let's suppose L. Okay, so L is a function of, let's suppose, v, such that the derivative of L with respect to v gives you p. Okay, and let us also define a function h, which is a function of p, such that the derivative of h with respect to p is equal to v. Okay, I am defining it in such a manner. I am saying that let there be a function, let there be two variables v and p, such that p is a function of v. If that is the case, then v can also be written as some function of p. A reverse transformation will also exist. I am also saying that there are two other functions. Let's suppose L, which is a function of v, such that the derivative of L with respect to v is p, and another function h, such that the derivative of h with respect to p is equal to v. All right, in that case, now let us do the analysis that we are interested in. In that case, अगर मैं L को लिखता हूँ, now L, I have already said that L is a function of v. I can also say that since v is a function of p, in a way L is also a function of p. Yes, मैं L को p के टर्म्स पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि v is a function of p. उसी तरह से अगर h है, h को मैंने define किया है that h is a function of p, then since p is a function of v, so I can also say that h is a function of v in a sense. Are you understanding? Yes, sir. Huh. Now let us look at a particular integrations, and I'll talk about the meaning of those integrations. Now let us take a look at the following. Now, if I integrate p dv from 0 to v, इस ग्राफ में अगर मैं p dv को इंटीग्रेट करता हूं from 0 to v, what would that represent? If I integrate p dv from 0 to v, what would that represent इस ग्राफ में? Area under the curve. Area under the curve. Very good. So if I say this is p dv, then it simply represents the area under the curve. Okay, so it will represent that this area, it will give us this area.
This is what it represents, this integration p dv from let's suppose 0 to v, अगर वो limit 0 and v है यहाँ पे, ठीक है. This is what this integration represents. So 0 to v p dv, इसको हम लिखते हैं from here. मैंने define किया है 0 to v, p is what? P is nothing but dl upon dv. Okay, मैंने यहाँ define किया है. So this dv here, this is nothing but from 0 to v dl. So since L is a function of V, therefore I can write this as LV. Okay, so this is nothing but LV. This is nothing but LV. Okay, from 0 to V, that's it. All right, fine. This is simple enough. Again, let me look at another integration. If I say V dp from 0 to p, v dp from 0 to p, what would that signify here? सर ये भी एरिया अंडर द कर्व होगा, पर जो p एक्सिस के साइड होगा एरिया. Exactly, exactly, very good. So this is v dp will simply represent the area under the curve where p is represented by the x-axis. So हमको इस ये एरिया है basically. Represents this area. Okay, like this. So this is the integration of v dp. This is the integration of v dp from 0 to p. And similarly, I can say that this is equal to v dp is so v can be written as dh upon dp. So this is equal to 0 to p dh upon dp. So yeah, this I have just bought it from here. Okay, so this is nothing but 0 to p dh. So this is equal to h in terms of p. Okay, hp, that's it. This is the function that I've defined, hp. All right, now, so from the diagram I can say that the sum of the areas from this is from 0 to v and this is from 0 to p is a rectangle, right? The sum of the areas is a rectangle. From diagram I can say that p into v is equal to 0 to v p dv plus 0 to p v dp. Yes, because if this is a rectangle, the area, both the two areas combine to create this kind of a rectangular surface having lengths v and p, then v into p is nothing but the sum of these two areas, which is basically equal to L plus h. Or I finally get an expression p v is equal to L plus h, or h is equal to p v minus L. Okay, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ. I'll come back to this expression in a moment. Okay, I'll come back to this. In fact, we can actually prove that this expression is true. मतलब we can cross check that this expression is in fact true. So we can cross check that this expression is true. How? dh ले लेते हैं. dh is equal to d of pv minus L. So this is nothing but p dv plus v dp minus del L upon del v into dv. Okay, so this is nothing but
v dp plus p dv minus del L by del v, और dl by dv is nothing but p. This is p dv. So ये दोनों cancel out हो जाते हैं. You end up getting v dp, which is nothing but dh upon dp is equal to v, which is the same equation that I just started with. dh upon dp is equal to v. So we prove that this is in fact true. Okay, so this expression holds true. All right, so what is the point of all of this? Well, the point of all of this is that I have come up with a transformation of the Hamiltonian from the Lagrangian. Okay, what I have done is I have come up with a transformation of a Hamiltonian from the Lagrangian. But before I explain this, let me write down the equation, because L जो है, L है आपका is a function of Q, Q dot and T. H जो है is a function of Q, P and T. Okay, going back to here, जो आपका L है, L is a function of Q, Q dot and T, and जो H है, that H is a function of Q, P and T. All right. So I'm just trying to do that transformation, and this seems like a reliable candidate for that kind of a transformation. Okay, so the transformation from Q dot T to Q P T is basically given by this. The only difference is that यहाँ पे H को हमने as a function of P लिखा है और L को हमने as a function of V लिखा है, जबकि in reality L is not just a function of V but also Q, Q dot and T, and this is not just a function of P but also Q, P and T. So it's a basically multivariable function. तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. Nothing is going to change. So if we say that you replace V with Q dot, okay, then P instead of being a function of V is actually a function of Q dot. जैसा मैंने स्टार्टिंग में लिया था, यहाँ पे मैंने माना था V को वेलोसिटी नहीं माना था, मैंने जस्ट वेरिएबल माना था, और P को भी एक वेरिएबल माना था. तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि V इज़ नथिंग बट द Q डॉट एंड P इज़ जस्ट P इटसेल्फ. तो ऐसे सिचुएशन में we can conclude that del L upon del Q dot is equal to P, where P is the canonical momentum. Yes, कैसे? यहाँ पे मैंने मान So you are not audible. Hello, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. कितने टाइम से, मैं बहुत टाइम से बिना ऑडियो के बोल रहा था क्या? नो सर, आप जब ये DL by DQ डॉट. हाँ ओके, अच्छा ओके ठीक है. हाँ हो सकता है, सेटिंग बहुत सारे सिस्टम्स है ना, माइक भी है और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, वेब कैम वगैरह भी है. सो ओके, तो मैं ये कह रहा था बेसिकली कि अगर मैं
यहाँ पे जो मैंने आपको अभी जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया, उसमें मैंने v और p को जस्ट एक वेरिएबल माना था और खुद ही से डिफाइन किया था ये सारी क्वांटिटीज़। लेकिन अगर आप अब मैं v को q डॉट से रिप्लेस कर देता हूँ, q डॉट बीइंग द जनरलाइज वेलोसिटी, इन दैट केस डेल एल अपॉन डेल वी को भी मैंने माना था इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट इज इक्वल टू पी। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि जनरलाइज मोमेंटम इज डिफाइंड एज डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। सो ऑटोमेटिकली इफ v is defined as the generalized velocity as q dot, then p automatically becomes a generalized momentum. ठीक है, p automatically becomes a generalized momentum. So यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे v is represented by the generalized velocity and p is represented by the generalized momentum. ठीक है, so we finally have a transformation between the Lagrangian and the Hamiltonian. So the transformation between the Lagrangian and the Hamiltonian is simply this equation h is equal to p v की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे q डॉट माइनस एल, दैट्स इट। या इन जनरल मैं लिख सकता हूँ दैट हैमिल्टोनियन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ q p and t is equal to the generalized momentum multiplies by the generalized coordinate minus L, which is a function of q dot t. Okay, so this is a transformation. If you want to transform in a given system the Lagrangian to a Hamiltonian, then this is the equation that you will use. And even though this is a multivariable equation, it is यहाँ पे मैंने ये जो शो किया है, it is going to be relevant for these functions as well. Okay, so h is nothing but p q dot minus n. So this is kind of an important relationship. जब भी आपको कोई सिस्टम दे दिया जाए, उस सिस्टम में आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो, ठीक है, फिर उस सिस्टम में आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद आप लैग्रेंजियन फाइंड कर लो, फिर उसके बाद वहाँ से हैमिल्टोनियन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करते हो तो बाकी क्वांटिटीज़ भी ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे? तो उसके लिए वील हैव टू डिराइव द कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ हैमिल्टन। ओके, सो लेट अस डिराइव द कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ हैमिल्टन। तो उसके लिए what we are going to do is we are going to use this equation and we are going to choose the differential of h. So we are going to do dh. So if we do dh, then dh can be written as q dot dp, ठीक है, प्लस मैं इसमें i के टर्म्स पे लिख देता हूँ because it may signify that there are many generalized coordinates here. So let us write that for h is equal to pi q dot I. So basically क्या होता है यहाँ पे g, अगर there are more than, if I is equal to 1 to n, तो it involves a summation here. Okay, there is a particular summation involved if let's suppose there are more than one generalized coordinates. Okay, for more than one generalized coordinates you will end up getting a summation here. Alright, so इसलिए मैं इसको i के टर्म्स पे लिख देता हूँ. I simply means that अगर वहाँ पे i is equal to 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो you will end up getting as many number of equations. So pi q I dot minus L, we get the total differential dh is equal to qi dot dp I plus pi dqi dot minus, now Lagrangian is a function of q and q dot and t also, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ del L अपॉन del qi dqi, टोटल डिफरेंशियल में del L अपॉन del qi डॉट
डी क्यू आई डॉट माइनस del L upon del T dt. Okay, so this is one way of writing the Hamiltonian, the total differential of a Hamiltonian. So this is a total differential. Okay, but the Hamiltonian is also a function of Q, P and T. So यहाँ से भी हम total differential निकाल सकते हैं. So from here also I can say that dH is equal to del H by del QI dQi plus del H by del PI dPi plus del H by del T dt, है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सिर्फ क्योंकि हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ क्यू पी एंड टी, इसका टोटल डिफरेंशियल लुक लाइक दिस, बट बिकॉज हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू दिस, इसका जो टोटल डिफरेंशियल लुक्स लाइक दिस. यस, Yes, sir. so now I can compare these terms. Okay, so I can compare, let's suppose a term with this term. I can compare this term with this term. Okay, I can compare this term with this term. और यहाँ पे बाकी जो दोनों टर्म्स है वो कहाँ गई? हाँ, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना. del L by del QI, del L by del Q. ओके, कहाँ गया del L by del Q? So del L by del V is equal to P. del L by del V is equal to P. तो del L by del V is equal to P मतलब मैंने कुछ और लिख दिया, एक सेकेंड. हाँ सॉरी, मैं ये नहीं होगा, ये वाला टर्म नहीं होगा, कोई बात नहीं है, छोड़ दो. तो यहाँ पे del L by del QI डॉट इज नथिंग बट PI, है ना? बिकॉज del L by del QI डॉट इज इक्वल टू PI, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है. तो ये आपका PI डी क्यू डॉट आई डॉट, ये दोनों जो है आपका कैंसल आउट हो गया, है ना? Yes, sir. ये दोनों आपके कैंसल आउट हो गए. तो फिर लेट मी जस्ट टेक अ लुक, एक सेकेंड. PI डी क्यू आई डॉट एंड माइनस PI डी क्यू आई डॉट कैंसिल आउट हो गए. बचा आपका Q डॉट डी पी आई एंड माइनस del L अपॉन del QI. ओके, अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ प्रूव नहीं किया है. मैंने ये del L अपॉन del QI क्या ये प्रूफ किया है क्या? No, sir. नहीं प्रूफ किया, तो इसको प्रूफ कर देते साइड में, इसको साइड में प्रूफ कर देते. ये क्वांटिटी क्या होगा? सो मैंने ये प्रूफ किया है दैट PI इज इक्वल टू del L अपॉन del QI डॉट, है ना? तो इफ़ यू लुक एट द Lagrange इक्वेशन, मैंने हाँ ये प्रूफ करना था मेरे को, Lagrange इक्वेशन, तो दैट इज़ नथिंग बट d बाई डी टी ऑफ del L अपॉन del QI डॉट माइनस del L अपॉन del QI, सॉरी del QI, जस्ट del QI इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना? सो del L बाई del QI डॉट is nothing but d by dt of PI minus is equal to del L upon del QI, है ना? So del L upon del QI is equal to PI dot. Is this clear? Yes, sir. हाँ, ये दिख रहा है. तो इसको मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, so this is nothing but basically del L upon del QI इज इक्वल टू PI डॉट. ओके, तो फिर मैं इनको फिर कंपेयर करता हूँ बाय कंपेरिजन. लेट अस कंपेयर
बाय कंपैरिजन डी क्यू आई कहाँ पे है, हाँ डी क्यू आई, हाँ। तो बेसिकली क्या कंपेयर होगा, ये दोनों कंपेयर होंगे ना, ये दोनों कंपेयर होंगे। ओके, इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, डेल एच अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस पी आई डॉट, यस, डेल एच अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू माइनस पी आई डॉट, ठीक है। Yes. उसी तरह से मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ डी पी के आई, इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ, दिस गिव्स अस क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई, ठीक है। और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो फिर आई एंड अप गेटिंग माइनस डेल एल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी। इज दिस क्लियर गाइस? मैंने एक बार हैमिल्टोनियन का जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसका डिफरेंशियल लिया, और दूसरी बार सिर्फ हैमिल्टोनियन की वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लिया और दोनों को कंपेयर किया, और उसमें मैंने ये सब्स्टिट्यूशंस यूज़ की, एक ये सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ये सब्स्टिट्यूशन। दिस इज क्लियर? Yes, sir. So finally we end up getting these equations. Okay, these equations are known as the canonical equations of Hamiltonian. Canonical equations of Hamiltonian. So this is one equation, minus pi dot is equal to del h upon del qi. This is another equation, q dot is equal to del h upon del pi, and this is another equation, minus del l upon del t is equal to del h upon del t. तो हमें इन इक्वेशंस का फ़ायदा क्या है, लाइक वाई एम आई डूइंग ऑल ऑफ दिस? वेल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जैसे कि अगर आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है, लेट इज समबडी हैज़ गिवन यू अ सिस्टम, तो आपने वो सिस्टम में सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फिर आपने फाइंड आउट किया कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज वेलोसिटीज़ क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है वो आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। और उसके बाद आपने फाइंड आउट किया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और लैग्रांजियन क्या है। फिर उसके बाद आपने क्या आपने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन किया बाय राइटिंग डाउन द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन किया, और इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करके आपने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाता है इसका सोल्यूशन जो भी है एक्स आर। लेकिन कभी कभी आप लैग्रांज ऑब्टेन नहीं भी कर सकते, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप हैमिल्टोनियन को फॉर्मुलेट कर सकते हो, ठीक है। एच इज इक्वल टू, यहाँ से डायरेक्टली आपने इसको राइट डाउन कर दिया, ये लैग्रांजियन आ गया तो आप हैमिल्टोनियन बना दिया। फिर हैमिल्टन्स इक्वेशंस से आप क्या कर सकते हो, आप पी आई डॉट फाइंड आउट कर सकते हो, आप क्यू आई फाइंड आउट कर सकते हो, क्यू आई डॉट। So what is QI dot? QI dot gives you an idea about the velocity of the system or particle involved in the system, and PI dot basically gives you an idea about the time derivative of the momentum. तो मतलब without actually solving the equation, you can obtain these quantities. Are you understanding? Without solving the equation, you can obtain these quantities. तो ये quantities से फिर आप कुछ important information भी derive कर सकते हो जो बिना equation को solve किए ही आप यू कैन डिराइव दीज क्वांटिटीज़। ओके, सो मैं एक आपको, आज कितना टाइम है, मुझे कॉलेज भी जाना है एक्चुअली, 1:55 मिनट्स लेफ्ट। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको एज अ होमवर्क ट्राई कीजिएगा, एंड देन विल सी व्हाट यू कैन डू। सो क्वेश्चन इज सॉल्व द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर problem using Hamilton's approach। मतलब आपके पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, लेट्स सपोज ये भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर ही है, ठीक है। मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ द स्प्रिंग मास ऑसिलेटर यूजिंग द हैमिल्टोनियन अप्रोच। मतलब आपको ऐसे जाना है, ना कि ऐसे, समझ रहे हो, जैसे हम ट्रेडिशनली जाते थे लैग्रांज इक्वेशन में, वैसे आपको नहीं जाना है, ठीक है।
आपको हैमिल्टोनियन अप्रोच से स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो आपका सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन करना है। ये एज अ होमवर्क लिख लीजिए। यू ट्राई दिस क्वेश्चन।